Good afternoon. So I got some half an hour at hand, so I'm going to record this cannizzaro, tischenko, and benzoin condensation lecture. See, we have already seen what is aldol condensation, and for that alpha H is required. Now, cannizzaro is also a reaction of aldehyde and ketones. Cannizzaro is also a reaction of aldehyde and ketones, but the compulsory condition here is there should be absence of alpha H. Absence of alpha hydrogen is a must for cannizzaro. Okay, यहाँ presence of alpha H नहीं, यहाँ absence चाहिए cannizzaro में. ठीक? It is a type of redox reaction because one of the molecule will be oxidized, other is reduced. It is characteristic of aldehydes. It is characteristic of aldehyde. Aldehydes की खास reaction है. It is not given by ketones usually. Correct. Here we need strong concentration or high concentration of base. Base again I would say you can have multiple at your hand. आप अलग अलग तरह के बेस इस्तेमाल कर सकते हैं. Different as per requirement. Now let us write the net reaction first. As I said, it is for compounds in which alpha hydrogen is absent. So, for example, if I have formaldehyde, then in presence of concentrated NaOH or KOH and heat, you will have HCOO Na plus CH3OH. Almost the acid and the alcohol formed are 50-50. Okay, let me draw the mechanism of this particular cannizzaro. So HCOH plus OH minus this attacks. Okay, ये इस पर attack करेगा, and of course this reaction is reversible. OH. Now what happens is this particular reaction is reversible because when this reverts, usually the OH minus is the better leaving group and reaction comes backward. So even during aldol, this reaction is always there, but it does not generate the net product. Okay, it comes backward. Whereas the formation of enolate, वो अपने आप में nucleophile बन के it attacks further. Now this hydride attacks on next molecule of aldehyde, nucleophilic attack इस तरह से, and this step is RDS. यही step इसमें RDS है. Okay, so now this anion is becoming acid and this is becoming CH3O minus. This step is irreversible. It is not going to have reverse of this H minus shifting from here to here. Now there is a proton exchange between acid and alcohol. So salt and alcohol is formed. Yes, sometimes when concentration of OH minus is too high, then this form a dianion. HO minus dianion is formed and then it further attacks. Right, it is usually said that presence of electron releasing group ho, so this becomes more and more unstable and it becomes more and more prone to donation of hydride. Right, so isko dekhte hue you can say that rate equation is rate constant into formaldehyde. Normal condition में लिख रही हूँ इसलिए mono anion H OH and O minus. Now this concentration can be further replaced as K dash formaldehyde into OH minus. So finally
normal condition, some new constant K double dash. Formaldehyde के respect में it is a second order. Base के respect में it is a first order. Right? This is when monoanion is the hydride donor. When monoanion is the hydride donor, then you will have this rate equation. If dianion is the hydride donor, which is rarely formed, and if dianion is the hydride donor, अगर ऐसा हो तो, okay, then it is HCHO के लिए it is second and base के लिए भी second, right? Then rate is proportional to these. Then rate is proportional to concentration of formaldehyde square and concentration of OH minus ka square, but it is rare, so I cannot generalize it. Okay. And we can use the word disproportionation also. Disproportionation. And we can use the word disproportionation in cannizzaro. Kab, when same aldehyde is oxidized and is reduced. Okay, same aldehyde is oxidized and other mole of same is reduced. Then you can use the word disproportionation also. Otherwise, at least it is redox. Okay. Again, like aldol or any other reaction, it is simple cannizzaro. When same only one type of aldehyde is taken. For example, we just took formaldehyde ke 2 moles. In presence of OH minus heat formed HCONa plus CH3OH. And please mind it, never write it HCOH. That is wrong under basic conditions. Be careful about that. Benzaldehyde लिया, उसके लिए हमने हीट करा. It is PHCONa plus PHCH2OH. हमने Me3CCHO. This particular thing is called pivaldehyde. इसको OH minus में डालकर हीट करा. We'll have Me3C CH2OH plus Me3C CONa. These type. Second type होगा crossed cannizzaro. Crossed cannizzaro. In case of crossed cannizzaro, we'll use two different types of aldehydes. Okay, so crossed cannizzaro, two different types of aldehydes are used. Aldehydes are used. Then it is called crossed cannizzaro. Now, in case of crossed cannizzaro, you should always remember that molecule of aldehyde which will result into a stronger acid is the one which will be oxidized. Okay, that aldehyde molecule, that aldehyde molecule which have faster rate of
attack of OH minus will be finally oxidized to form stronger acid. This is a rule. Okay, हमेशा कौन से को oxidize करना है? The one which will be stronger acid in the finally. For example, if I have benzaldehyde and formaldehyde, और इसके लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि order of Ka is formic acid, then it is benzoic acid, and then it is other aliphatic acid. So if you take this and treat it with NaOH and heat, it forms PHCO. Oh, and nahi, it will form PHCH2OH and HCONa because stronger acid is formic acid, right? If you have benzaldehyde and pyraldehyde, Me3C CHO, सेम वे अगर हम NaOH और हीट में लें तो इट विल फॉर्म PHCONa प्लस Me3C CH2OH. Okay, Me3C CH2OH. If we have two types of benzaldehyde but they are substituted, for example this, और अब हम इसको NaOH में हीट करेंगे तो इट इज द नाइट्रो वन विच विल बी अटैक्ड बाय OH माइनस. सो ये बनेगा CONa NO2 और ये बनेगा CH2OH OMe. इज दैट क्लियर? इस तरह से रिएक्शंस प्रोसीड होंगी. ठीक, यस, ये दोनों हुए हमारे क्रॉस्ड और सिंपल. देयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ intramolecular cannizzaro. Intramolecular cannizzaro reaction, फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम बेंजोइन कंडेंसेशन इसी कैटेगरी में ही लगभग आ जाते हैं, है ना? जैसे अब मेरे पास है दिस और इसको मुझे NaOH में हीट करना पड़ा तो OH माइनस एक पर अटैक करेगा और इंट्रामोलिकुलरली हाइड्राइड एक्सचेंज विल बी सीन. सो आई विल हैव CH2OH CONa. जैसे जैसे मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन शुरू करूंगी, even this molecule, despite having alpha H here, फिर भी ये cannizzaro देगा, intramolecular cannizzaro देगा. OH minus will attack here, so it is CH3 CHOH CONa. Okay, इसी रास्ते पर चलते चलते on the same track, इसको आप चाहे एक्सेप्शन बोलिए कि अल्डोल का एक्सेप्शन है, क्योंकि अल्डोल तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में वैसे भी इंट्रामोलिकुलर अल्डोल विल गिव वेरी अनस्टेबल प्रोडक्ट, राइट? सो उसका कोई अर्थ है ही नहीं यहाँ कि इंट्रामोलिकुलर अल्डोल हो जाए यहाँ. सो इट इज गोइंग टू बी डायरेक्ट कैनिज़ारो रिएक्शन. सवाल है कैसे? OH माइनस अटैक करेगा, पाई ओपन, सो यू विल हैव OH O minus double bond O, right? And when this O minus will revert, okay, when this O minus will revert, then ring contraction is what is observed. ये यहाँ से इस position पर attack करेगा. This is the RDS, right? This is the RDS. So what will I have is a 5-membered ring, and a result is a alpha hydroxy carboxylic acids. अंदर ही अंदर प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ, so this has become OH, this will become CO
Na. Right? Now there is this one misconception that as and when alpha position पर increase होता चला जाता है प्लस आई तो अल्डोल फेल होता जाएगा. यस यस, अल्डोल कंडेंसेशन विल फेल. जब मैं इसे OH माइनस में डालूंगी तो एल्डोल कंडेंसेशन मेरा फेल हो सकता है. नो डिस्प्यूट अबाउट दैट. बट मैं ये नहीं कह सकती कि अल्डोल फेल हो जाएगा, है ना. इट इज नॉट गिविंग अल्डोल कंडेंसेशन बिकॉज देयर इज नो more alpha H. So only aldol is formed. Aldol reaction is observed. Reaction is observed. But don't say that aldol will fail. ये हमारे कई नोट्स में मैंने देखा है कि कई टीचर्स इसको लिखा देते हैं इट इज़ एन एक्सेप्शन, और अगर इस तरह का सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो अल्डोल फेल हो जाएगी. नहीं, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा बट अल्डोल रिएक्शन होगी और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनेगा. ठीक. हाँ, ये जरूर सही है कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड से हायर आपने अगर इसे हीट करा विथ बेस देन इट स्टार्ट्स गिविंग कैनिज़ारो. पर ये तो लगभग हर कंपाउंड दे सकता है, इसमें इसकी कोई खास बात नहीं है. द प्रॉब्लम विथ कैनिज़ारो इज अ बैरियर टू क्रॉस द हाइड्राइड डोनेशन. राइट. तो अगर मैं किसी भी कंपाउंड को रिक्वायरमेंट के अलोंग जैसी मुझे ज़रूरत हो वैसी हीट दूं तो सब बना सकते हैं. ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ यही बना रहा होगा. ये फेमस है, दैट इज ट्रू. ये ज़्यादा लोगों को पता है, ज़्यादा इस पर्टिकुलर कंपाउंड पे बात करते हैं. दैट इज़ वाई ये एक मिसकंसेप्शन डेवलप हो गया, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है ना. हाँ, पर ये ज़रूर ध्यान रखना कि अब जैसे ये देखो CCl3CHO, अब ये सब इंट्रामोलिकुलर से हम आगे बढ़ गए. हम इस केस के बाद इंट्रामोलिकुलर से आगे बढ़ गए, फर्दर एग्जाम्पल्स पर आ गए हैं, है ना. ये इसमें मैं NaOH डालूं. Yes, it does not have alpha H, but the better leaving group is no more hydride. This will act as a better leaving group. And if this will act as a better leaving group, तो जब ये पलटेगा तो हाइड्राइड नहीं जाएगा, CCl3 माइनस जाएगा, और CCl3 माइनस गया तो HCOOH. तो दिस रिएक्शन देखने में लग रहा है कि इट इज एन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा H, तो इट शुड गिव कैनिज़ारो. नो, ये कौन सी रिएक्शन यहाँ पर आ गई है. देखो ये हैलोफॉर्म दे गया. ये हैलोफॉर्म के रास्ते पे हैं हम. दिस इज हैलोफॉर्म रिएक्शन विच इज ऑब्जर्व्ड. ठीक. इसी सीक्वेंस में इंट्रामोलिकुलर की सीक्वेंस में ही जब हम बढ़ते जाएंगे तो हमें मिल जाती है नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड benzoin condensation. Benzoin condensation, very important reaction, है ना. it is very important reaction. क्या है इस रिएक्शन में इतना खास. सबसे पहले it is characteristic of aromatic aldehydes. हर एक नहीं देगा ये. it is characteristic of aromatic aldehydes like benzaldehyde, furfural. Furfural is a twin brother of benzaldehyde. ये ध्यान रखना. Every property which is applicable for benzaldehyde is applicable for furfural. Okay, so it is characteristic of aromatic aldehyde, PHCHO, furfural, etc. Right? इसका जो मीडियम होता है या जो हम चीज लेते हैं जिससे एक रिएजेंट लेते हैं, इट इज अल्कोहलिक aqueous KCl. ना हम पूरी तरह से अल्कोहलिक ले सकते हैं ना aqueous. We have to strike a balance between the medium polarity as alcoholic aqueous KCl is used. And this is a wonderful reaction which is highest rate जो होगा इसका
highest rate is unsubstituted benzaldehyde. बोले मतलब इसका मीनिंग है both EWG and ERG, electron withdrawing and electron releasing groups on benzaldehyde decreases rate of benzoin condensation. Both decreases rate of benzoin condensation. आओ देखें कैसे. बेंजल्डिहाइड, ठीक, 2 मोल्स. हमने इस पे लिया अल्कोहलिक एक्वस केसियन, राइट. अब इसमें हमें जो मिलना चाहिए, देखो इतनी कमाल की बात है कि द प्रोडक्ट इज एग्जैक्ट डाइमर. दिस इज एग्जैक्ट डाइमर ऑफ PHCH. तो ऐसा लगेगा जैसे अल्डोल हो गई, डाइमराइजेशन हो गया है ना. बट देर इज नो अल्फा एच हियर, सो इट शुड हैव गॉन फॉर कैनिज़ारो. तो ये कैसे हुई, राइट. आओ देखते हैं इसके मैकेनिज्म की बात करें. इट्स मैकेनिज्म इज फर्स्ट स्टेप, बेंजल्डिहाइड पर Cn माइनस का अटैक. फर्स्ट स्टेप इज दिस इज स्टेप 1 and we'll have PHCHO minus C triple bond N. So we need a reagent which is sufficiently nucleophilic to attack the first step. बढ़िया बात. Now this is the RDS. ये आ गई है हमारी RDS और इसमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड पर हमें अटैक की तैयारी करनी है. ओके, लेकिन कैसे, हाउ विल आई अटैक. सो एक सेकेंड, मैं एक स्टेप पहले इस RDS को मेंशन कर गई, मुझे एक और स्टेप ले लेना चाहिए. ड्यू टू दिस -I-R, there is a intramolecular proton exchange. So PHCOH minus C triple bond N is formed. Now this has become nucleophile. इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया है. ये वाली है हमारी RDS. अब PHCHO पर this will attack. Pi open. So I will have PHC C triple bond N OH C H PH O minus. Now as you can see, again there is a intramolecular proton exchange. There will be once again. Why? Because O minus, which is having sign minus I, will be more stable. So PHCO minus C triple bond N CHPH OH, and this reverts like this. Okay, ये यहाँ से leaving group PHCO CHOH PH, this product is formed. This is called benzoin condensation. ठीक है, this is called benzoin condensation.
So benzoin condensation, this product is called benzoin and the reaction is called benzoin condensation. Now why aqueous alcoholic KCN, है ना? Why aqueous alcoholic KCN? So we need aqueous alcoholic KCN because we need right polarity. Right? इतना भी नहीं कि cyanide is hydrolyzed, इतना भी नहीं नॉन पोलर हो जाए कि आयनिक मैकेनिज्म टोटली फेल हो जाए. Right polarity for the reaction. Okay, so we have a combination of aqueous and alcohol. Next, why Cn minus? It is good, rather I can use sufficiently good nucleophile in first step, sufficiently good leaving group in last step. Okay, and third, its presence makes carbonyl से अटैच ये जो H था acidic. Where this happened, देखो ये वाली बात जो मैंने कहा कि its presence makes acidic, ये वाली बात हुई है यहाँ पर. इस H को acidic कर दिया है, right? तभी हमारे पास वो अनायन डेवलप हुआ जो अटैक कर पा रहा है नेक्स्ट स्टेप पे. सो इन सब कारणों की वजह से वी यूज अल्कोहलिक एक्वस एंड केसीएन. हम कहने को अच्छा न्यूक्लियोफाइल I माइनस, अच्छा न्यूक्लियोफ्यूज I माइनस, तो Ki ले लेते, बट इट्स प्रेजेंस वुड नॉट हैव मेक दैट कार्बोनिल H एसिडिक. एसिडिटी बढ़ानी है नाइट्रो ले लो, पर फिर वो फर्स्ट और थर्ड चीज को, फर्स्ट और सेकंड चीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा. राइट, सो दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक. इसका एज आई सेड कि फरफिराल इज अ ट्विन ब्रदर. If same thing is asked with this, अगर इसके साथ हमें alcoholic aqueous KCN दिया गया, right? Alcoholic aqueous KCN, तो तुम बनाओगे CHOH CO. This is called furan. Furfural. Furfural. Okay, ये है फ्यूराइन. हम और एक पूरी सीक्वेंस, एक कॉम्प्रहेंशन की मैं तुम्हें तैयारी करके दूं कि ये बड़े काम की चीज है. कैसे? देखो तुम्हें दिया गया बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड से शुरुआत करी गई, अल्कोहलिक एक्वस KCN, इससे तुमने बना लिया बेंजोइन. इस स्टेप को हमने कहा बेंजोइन कंडेंसेशन. Now, with the use of dilute HNO3, mild oxidizing agent, say we'll oxidize it to benzyl. Okay, this is, यहाँ पर हमने क्या करा? यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन करा. और अब इसकी रिएक्शन आप कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ करा दो, NOH के साथ करा दो, लाइक इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो, आपको OH COO माइनस मिलेगा. ये कहलाएगा बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट. ओके, दिस इज, अगर मैं इसे प्रोटोनेट कर दूं या मैं यहीं पर लिख दूं फर्स्ट ये और सेकेंड H प्लस, तो ये बनेगा, दिस इज कॉल्ड बेंजिलिक एसिड. अगर मेरे दोनों जो बेंजीन्स हैं वो अलग अलग तरह के हों, if the two benzenes are of different types, okay, अगर दोनों जो है वो अलग अलग तरह के हों, तो अलग अलग तरह से क्या अर्थ है हमारा? अलग अलग तरह, जैसे एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, एक में रिलीजिंग ग्रुप हो,
तो हम फर्स्ट अटैक हमेशा कहाँ कराएंगे? जो विड्राइंग ग्रुप वाली बेंजीन होगी, though the product will remain same, but yes, the final product will then be chiral और आपको रेजिमिक मिक्सचर उसका प्रोडक्ट बनने वाला है। बेंजिल बेंजोलिक एसिड रीअरेंजमेंट। कुल मिलाकर देखो, बेंजल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो तुम्हें पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो तुम्हें पता होना चाहिए, पहली, it will give tolerance test positive, shifts test positive, but Fellings and Benedict fails because it forms some sort of complex. Second, it gives cannizzaro with NaOH. Aldol fails. And third is the benzoin condensation. ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं जो तुम्हें बेंजल्डिहाइड के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, बेंजल्डिहाइड को पहचानने की खास रिएक्शंस हैं। अब देखो, cannizzaro was a reaction which was given by compounds जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन cannizzaro जैसी रिएक्शन, tischenko रिएक्शन है ना, cannizzaro जैसी रिएक्शन, सो ऑल aldehydes, हाँ अभी भी ये कीटोन नहीं दे सकते. This is again a characteristic of all aldehydes only. All aldehydes, irrespective of presence or absence of alpha hydrogen, उनके पास है या नहीं हमें मतलब नहीं, with aluminium ethoxide gives cannizzaro-like reaction. But the product is ester. cannizzaro-like but the product is ester, ये क्यों मैंने ऐड किया? वेल, ये मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि कैनिज़ारो रिएक्शन या कैनिज़ारो लाइक रिएक्शन की अगर हमें से बात की जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कि यस, द प्रोडक्ट विल बी एसिड एंड अल्कोहल। बट यहाँ पर हम एसिड एंड अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं एसिड एंड अल्कोहल कंबाइन फर्दर एंड फॉर्म एस्टर। इसको करें और हमने कहा कि इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ अल्फा एच। सो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास RCH जो है, अब इसको अगर आपने एल्यूमिनियम इथॉक्साइड में हीट करा, राइट, तो आपको बनना चाहिए RCOO CH2R, एस्टर बनना चाहिए। इसी के दो मॉलिक्यूल, एक हो गया है ऑक्सीडाइज और एक हो गया है रिड्यूस। आओ देखें कैसे। मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म की बहुत जरूरत है नहीं। अब देखो, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड जब हम बेस यूज कर रहे थे, अल्फा एच और डेल प्लस दो जगह थी अटैक के लिए, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो एक ही जगह है। अटैक हो तो यहीं हो वरना ना हो। RCH सिंगल और डबल बॉन्ड O, Al OET होल थ्राइस माइनस प्लस। अब इसमें तो रेजोनेंस है, यहाँ ये यहाँ जा सकता है और इसीलिए अगला मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड इस पर ऐसे अटैक कर दे तो ये बन जाएगा RCH पॉजिटिव, ओके, ऑक्सीजन CHRO Al OET होल थ्राइस माइनस, राइट। ये वापस पलटा और ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्राइड शिफ्ट, इंट्रा
मॉलिक्यूलर हाइड्राइड शिफ्ट। हमारे पास बहुत रिएक्शन नहीं है जिसमें इस तरह की हाइड्राइड शिफ्ट होती हैं। RCH2O C डबल बॉन्ड O R एस्टर इज फॉर्म्ड। अब इसमें अल्फा एच का कोई सीन ही नहीं है। सो इवन अगर वहां पर ऑलरेडी, अब जैसे ये है, इसको मैं NaOH में डालूं तो बड़ा प्रॉब्लम है। ये कैनिज़ारो देगा, मुझे डाउट है ये कैनिज़ारो देगा। इट विल गिव दिस प्लस CH3CHO फर्स्ट एंड देन फिर टॉलेंस रिएक्शन, दैट इज first it will form 3 aldals and then ये पेंटारिथ्रिटॉल बनाएगा, राइट। लेकिन अगर इसी को आप एल्यूमिनियम ETO होल थ्राइस में डालोगे तो विदाउट डिस्टर्बिंग द डबल बॉन्ड you will have oxidized product CH2 CH double bond CH2 esters will be formed. So इसमें कुछ टच नहीं होगा साइड में। ओके एक चीज और याद रखो, अगर कीटोन्स आर treated with aluminum alkoxides, then it is Mirvin-Pondroff-Worley reduction, तब वो है MPV रिडक्शन। ये याद ही रखना है ना, फॉर्मिंग 2 डिग्री अल्कोहल्स। तो अगर कीटोन्स को आप एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड में ट्रीट करोगे तो आंसर आएगा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आपने ट्रीट करा है एल्डिहाइड्स को तो आंसर आएगा आपका एस्टर्स। And there are no exception, no issues, no problem with these reactions. They are extremely important for J overall. Is that perfectly all right? I hope ये तुम्हें कुछ और हेल्प देगा। So let me wind up here. इसके आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।